capital market, and here we will discuss about IPOs. ठीक है, issues by Indian companies, or which you can call it IPO. There are different kinds of issue, types of offer documents, issue requirements, pricing of the issue. There are so many things, but we'll only discuss which is important for your upcoming exam point of view. Okay, so different kind of issues are normally in primary market. So you know, capital market is divided into two parts, primary market and secondary market. So it is primary market. Whatever we are going to discuss now is basically a detailed analysis of the primary market. जो पहली बार इशू होता है, the issue for the first time to the general public is called primary issue. So primary issue, in primary issue there is a part 1 which is called public issue. Okay, initial public offer, IPO and FPO, this is to public issue. Then comes rights issue, composite issue, bonus issue and private placement. In private placement we have preferential issue, we have qualified institutional placement, then we have institutional placement program. Okay, तो आगे बढ़ते हैं. Public issue means issue open for public, for you and me, general public, like the Paytm IPO, like the LIC IPO, etc. For the first time someone is issuing shares to the public, it is called IPO. Why one needs to issue an IPO? एक कंपनी को आईपीओ कब इशू करना पड़ता है? जब उसके पास उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने होते हैं, जब उसको फाइनेंसिंग की जरूरत होता है, वो आईपीओ इशू करता है. पहली बार इशू करेगा तो आईपीओ. एक लिस्टिंग कंपनी को फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको कहेंगे हम एफपीओ. ठीक है, फॉलो ऑन या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके, other issues में आता है rights issue. When an issue of shares or convertible securities is made by an issuer to its existing shareholders as a particular date or fixed by the issuer, which is called record date, it is called a rights issue. तो मैं चाहता हूं कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस को और कैपिटल की जरूरत है, वो पब्लिक से लेगा तो क्या इशू करेगा? रिलायंस कंपनी को ऑलरेडी लिस्टेड है, वो चाहता है कि उससे पैसा चाहिए, तो वो पब्लिक से लेगा तो एफपीओ करेगा. आईपीओ तो उसका ऑलरेडी हो चुका है, एफपीओ करेगा. ठीक है, मगर एफपीओ नए लोगों से लेगा पैसा, तो वो चाहता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो उसको, उनको एक राइट मिले, उनको कुछ फायदा मिले. द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स शुड गेट सम बेनिफिट. सो दैट्स व्हाई यू विल अलाउ every person who is holding one share of Reliance will be eligible to buy another share of Reliance. Okay, so that is called rights issue. Clear? When a issue of shares is convertible securities by a listed issuer on public cum right basis, it's a composite issue. तो वो क्या करेगा? रिलायंस कहेगा कि मैं एक 100 करोड़ इशू करना चाहता हूं, उसमें से 30 करोड़ रिजर्व है मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, बाकी 70 करोड़ मैं पब्लिक से लूंगा एफपीओ के माध्यम से. ठीक है, ये पब्लिक को है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होगा. Those who are having 2 shares of Reliance can be able to buy 1 shares of Reliance. Okay, so that is called composite issue. Public issue plus rights issue is called public issue. Okay. अच्छा, उसके बाद एक बोनस इशू होगा. बोनस इशू, राइट्स इशू में क्या है? राइट इशू में एक सर्टेन टर्म एंड कंडीशन होगा कि जो 2 शेयर होगा उसको 1 शेयर बाय करने का मौका मिलेगा, वो परचेज करेगा तब होगा. मगर बोनस इशू तब होगा जब 1 शेयर किसी के पास है तो उसको अनदर 1 शेयर ऑटोमेटिकली मिलेगा बिना परचेज किए हुए. ओके, या फिर किसी के पास 2 शेयर है, उसको एक एडिशनल बोनस शेयर मिल जाएगा. That is called bonus issue. When an issuer makes an issue of shares to its existing shareholders without any consideration based on the number of shares already held by them as on record date, it is called a bonus issue. The shares are issued out of the company's free reserve or share premium account on a particular ratio to the number of securities held on a record date. ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 शेयर होल्ड करेंगे तो 1 शेयर को आपको खरीदने का मौका मिलेगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल भी सकता है. ये बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं.
करोगे। इसमें क्या होगा, 1:1 में आपको मिल जाएगा, जिसके पास है उसको ऑटोमेटिकली मिलेगा। यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, वो एलिजिबल होंगे खरीदने के लिए, पैसा है तो खरीद के एडिशनल शेयर लेंगे। यहाँ पे जिसके पास एक शेयर था उसको एक एडिशनल शेयर मिला, दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सबको नहीं मिलेगा, पब्लिक को नहीं मिलेगा। व्हेन एन इश्यूअर मेक्स एन इशू ऑफ शेयर्स or its convertible securities to a select group of person not exceeding 49 and which is neither a rights issue nor a public issue, it is called a private placement. मैक्सिमम 49 लोगों को, 49 इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को, एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों को जब कंपनी अपना शेयर इशू करेगा उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, neither it's a right issue nor a public issue, it is called a private placement। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मैंने आपको प्रेफरेंशियल शेयर में भी बताया था, सेम चीज है, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर इशू करे या फिर नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करे बाय लिस्टेड इश्यूअर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट QIP और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। 3 तरह से आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट लोगों को पैसा दे सकते हैं। ये 3 तरह के मार्ग हैं। ओके, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, व्हेन ए लिस्टेड इश्यूअर इश्यूज शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन in terms of provisions of the SEBI, it is called preferential allotment. The issuer is required to comply with various provisions before issuing it. ठीक है, an example of private placement, IPO करेगा तो पब्लिक को देगा। एग्जाम्पल, वो में अदानी ग्रुप है, उसको पता है कि पब्लिक में डिमांड कम हो सकता है, मगर उसका जो वैल्यू है वो बाकी कॉर्पोरेट को पता है, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता है, वो सिर्फ ICICI, एक्सिस, HDFC, SBI इन लोगों को अपना शेयर सेल करेगा। तो ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट हाई वैल्यू कंपनी या फिर कस्टमर को होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कौन लेता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, व्हेन ए लिस्टेड इश्यूअर इश्यूज इक्विटी शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स along with warrants and convertible securities other than warrants to qualified institution buyers only, it is called QIP। QIP मतलब सिर्फ QIB को बेचा जाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मैंने उसको who can be a qualified institutional buyer, provident fund having more than 25 crore net worth, mutual fund companies, banks, etc. Okay. IPP, when a listed issuer makes a further public offer of equity shares or offers sale of its shares by promoters or promoter group of listed issuer in which the offer, allocation and allotment of such shares is made only to qualified institutional investors, it is called IPP. Okay. If you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is. So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number to connect with us. Stay prepared and wish you success this year.